We'll do section D of the CBSE sample question. So question number 32 is based on the table. Table name is orders. So we have to write query for these three. So what is the first query? To display the total quantity of each product excluding the product with total quantity less than 5. तो हमें सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है जिनका टोटल क्वांटिटी लेस देन नो एक्सक्लूड करना है जिनका क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 हो और 5 उनको ही बस लिस्ट डाउन करना है. और टोटल क्वांटिटी कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप, स्मार्टफोन, हेडफोन, दीज ऑल आर different but we can consider the see यहाँ पे लिखा है the table contains many more records than shown here, so we can consider the टेबल में जो और भी रिकॉर्ड्स है उसमें ये प्रोडक्ट रिपीट हो सकते हैं. तो हमें क्वांटिटी को एड अप करना है ग्रुप बाय प्रोडक्ट. सो विल राइट द क्वेरी फॉर दैट. तो हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम. हमें क्या क्वांटिटी का टोटल क्वांटिटी निकालना है. तो ये जो क्वांटिटी कॉलम है आपका, इसको हम ग्रुप बाय करेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से और सारा क्वांटिटी को ऐड अप करेंगे विद द सिमिलर. सपोज और भी रिकॉर्ड्स इसमें लैपटॉप 4, तो दोज लैपटॉप क्वांटिटी विल बी एडेड इफ विल यूज ग्रुप बाय क्लॉज. So some quantity from table name is orders, ORDERS, orders. अब क्या हमारा क्लॉज है? देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेरी होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए. बट हम अगर ग्रुप बाय क्लॉज करते फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट, तो यहाँ वेयर की जगह हैविंग क्लॉज होता है. हैविंग दिस सम क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो ये हमारा क्वेरी कंप्लीट हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 1. सो सेकेंड क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द ऑर्डर्स टेबल शॉर्टेड बाय टोटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. So this is the price column. We have to display the whole table in descending order based on the price. So उसके लिए हमारा query होगा select star from orders, order by कौन से कॉलम? दिस प्राइस कॉलम के हिसाब से हमें ऑर्डर बाय करना. ऑर्डर बाय प्राइस. If we just write like this, it will arrange your table in ascending order, but we have to do in descending. For descending we do DESC. That's all. Third query हमारा to display the distinct customer name from the order table. तो यहाँ पे जो हमारे और भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उसमें सेम कस्टमर कैन कम एंड परचेज अदर प्रोडक्ट. सो कस्टमर्स का नेम भी रिपीट हो सकता है. So we just have to show the distinct customer. Again, for that the query will be यहाँ हमें distinct customer name display करना है, तो we have to use distinct keyword DIS. customer name का column C name from orders. That's all. ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेरी. और ये आपका डिस्टिंक्ट के साथ आप ब्रेस यूज़ भी कर सकते हो और यू कैन राइट जस्ट लाइक दिस ऑल्सो. बोथ आर फाइन. तो display the sum of price of all the orders for which the quantity is null. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखिए इस टेबल में हमें क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन ये कह रहा है कि हम और भी रिकॉर्ड्स जो हैं, तो ऐसा भी हो सकता है जिनमें क्वांटिटी एंटर करना भूल गए, क्वांटिटी की वैल्यू नल है. ऐसे प्रोडक्ट का हमें बस प्राइस कैलकुलेट करना है. तो वी कैन राइट सेलेक्ट सम
प्राइस from orders where quantity is null. That's all. और जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा जो क्वेरी का आउटपुट आएगा उसमें कॉलम का नेम भी यही होगा. इफ़ यू वांट टू चेंज योर कॉलम नेम you can use alias as some name that will display in query, but syntactically this is also correct. Now we'll come to the or part. Write the output. ये हमारा क्या था, आउटपुट क्या आना उसके बेस्ड हमें क्वेरी लिखना है. यहाँ पे क्वेरी दिया हुआ है, हमें आउटपुट लिखना है. अटेम्प्ट के रिस्पेक्ट में देखिए, दिस इज़ मोर easy to attempt, but if you are okay with the query you can attempt query as well. तो हम ये क्या है, select c name some quantity as total quantity. this is called alias. as करके जब हम लिखते हैं तो हमारे query result में ये वाला नाम नहीं आता है, this name will come. So select c name some quantity as total quantity from order group by c name. तो हम ग्रुप बाई कर रहे हैं सी नेम से. सो ग्रुप बाई सी नेम मीन्स कस्टमर नेम. और क्या कर रहे हैं, सी नेम और सम क्वांटिटी डिस्प्ले करना है. तो इसका आउटपुट क्या होगा, सी नेम, देन सेकेंड कॉलम. यू कैन ड्रॉ लाइक अ टेबल. आई एम जस्ट डूइंग हियर. C name, total quantity, so Jitendra, Mustafa and Davni, all these three and 1 to 1. Since the customer name is not repeating, so there will be no any change for the quantity. like सम हो ही नहीं रहा है, जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है वही हमें यहाँ डिस्प्ले करना. तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक अ टेबल, मेक अ कॉलम like this. So this will be the output of your first query. Now what is the second query? Select star from orders where product like phone. ये हमारा वाइल्ड कैरेक्टर क्या रहता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले करने हैं जिसमें एक सब स्ट्रिंग फ़ोन. इससे पहले कितनी भी स्ट्रिंग कैरेक्टर का अकरेंस हो सकता है, इसके बाद भी कितना भी कैरेक्टर अकरेंस हो सकता है. तो हमें सब कुछ दिखाना है. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, स्मार्टफोन और होम फोन, सॉरी हेडफोन, इस दोनों का ही. तो आपका ये कॉलम विल बी एग्जैक्टली सेम, OID, सी नेम एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस. ओनली आपको फर्स्ट रिकॉर्ड छोड़ करके सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू नॉट डिस्प्ले द फर्स्ट रिकॉर्ड, रेस्ट ऑल 2 रिकॉर्ड्स विद द हेडिंग you have to give for the second query result. What is the third one? Select OID, C name, product, quantity, price from orders where price between 1500 and 12,000. तो OID, C name, product, quantity and price. Basically आपको all the 4 columns दिखाने with the same heading name जिनकी वैल्यू 1500 से 12,000 के बीच में है. तो 1500 से 12,000 के बीच में 1500 to 12,000 के रेंज में जो आएगा, इंक्लूडिंग 1500 एंड 12,000. तो ये हमारा क्या, ऑल 15,000, 10,000, 12,000. सो ऑल 3 रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली आपको सेम टेबल कॉपी कर देना है. दैट विल बी द आउटपुट ऑफ योर थर्ड क्वेरी. नाउ सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स. तो इसमें हमें क्या, मैक्स प्राइस ये 12,000 होगा, हमें बस वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है.
So heading name will be the same exactly what it is written, max price and 12,000. This I can write. Max price and 12,000. This will be the output of the fourth query. Now the question number 33. A CSV file happiness.csv contains the data of the survey. Each record file contains the following data: name of the country, population of the country, sample size, happy, number of the person who accepted that they are happy. फॉर एग्जाम्पल सैम्पल रिकॉर्ड ऐसे करके आपके CSV फाइल में होगा. सिंगनी लैंड, population of the country, how many people participated and how many reported. So we have to use the Python to read all the data from the file in the form of list and display all the records for which the population is more than, and count the number of the records. So we'll see the first part, read all the data. I have written the code here. So to work on CSV file, we first need to import CSV module. Then as per the question, it is asking to read the file happiness.csv. So with the file open, if we don't provide any mode, it by default it opens in read only mode. फिर हमें CSV रीडर, ये वेरिएबल है, CSV डॉट, ये हमारा जो मॉड्यूल है उसमें एक रीडर मेथड है, उसमें फाइल का ऑब्जेक्ट पास करना होता है. In this line we are just reading the heading because CSV फाइल में आपका पहला हेडिंग होता है, उसके बाद से आपका रियल वैल्यू शुरू होता है. This is for the next question, we don't need it now. And now हमारे CSV reader, when we read like this, it read all the data from the file in the form of list. So we can iterate that. So each row में हमारा वैल्यू कैसा है, ऐसे country name, then population, how many people participated and how many people are happy, like this. So we have to display where the population is more than this. So list 0 index country name हुआ, first index हुआ population. So that is why the first index, जब हम फाइल से रीड करते हैं तो everything is a string, so we have to convert it into integer. If that value is greater than 50 lakhs, then only we have to print that. And I will show you also how our happiness.csv looks. So this is the file. This is, each value is separated by comma, that is, it's called comma separated values. So this is the file. We have Signiland greater than 50 lakhs and Singapore greater than 50 lakh. Total 4 records we have, but only 2 record it will display. So I'll just execute this. So only those 2 record displayed. Now next question is count the number of records in the file. So whole logic will be the same. Since we have to count the number of records, so we'll take a counter variable. Now we don't need this. Just whenever it will enter the for loop, we'll increment the count value by 1, and when it will finish, the for loop will just show total number of records. That's all. So it will show total number of record 4. So this is our second part. Now question number 34. Someone has been entrusted with the management of Law University database. He needs to access some information from faculty and courses tables for a survey analysis. Help him to extract.
So based on these two tables we have to write the query. तो पहला क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स ऑफ दोज फैकल्टीज हुज सैलरी इज लेस देन 12,000। तो जब हम टू टेबल्स का यूज़ करके कोई क्वेरी लिखते हैं तो हम ज्वाइन का यूज़ करते हैं, नेचुरल ज्वाइन और जस्ट सिंपली ज्वाइन। विल जस्ट राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम what is the first table name, faculty will give a alias name F, join what is the second table name, courses. So however your name will be given, you should write like that only. So courses, select star from faculty F, join courses से where, अब हमने join clause का हेल्प किया। अगर हम नेचुरल ज्वाइन यूज़ करें तो हमें इस जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ उस क्लॉज की ज़रूरत नहीं होगी, बट इफ़ यू जस्ट यूज़ ज्वाइन देन यू हैव टू राइट FID equal to C dot FID and what is the criteria, that salary should be less than 12,000. F dot salary less than 12,000. So that's all. This is our first query. Now to display the details of the courses whose fees is in the range of 20,000 to 50,000, both value included. So here we just need to use courses table. So for that we will write select star from courses where fees, column name is fees, where fees we can use between, in between both ranges are included, 20,000 and 50,000. The second query is complete. So what is the third query? To increase the fees of all courses by 500 which have computer in their course name. So computer network, computer security, so whichever course has computer in it, for that we have to update the fee, like increase the fee by 500. So update which table, courses, set fees equal to fees plus 500, not for all, we have to provide condition. So where C name, the course name column is C name, C like computer. So this is while character, either 0 or more occurrence before or after the string. So this completes your third query. Now the fourth one, to display names F name and L name of faculty taking system design. So we have to display the faculty name who are taking the subject. So again we have to use both the tables. So it will be similar to this query till here. Now here what is the second criteria? Where the course name should be system design.
C name equal to system design. That's all. Now we'll see the OR part to display the Cartesian product of these two tables. So it's just like that. So to get the Cartesian product, we just have to write select a star from both the table name courses. And that's all. So next question 35. A table named stationery in ItemDB database has the following structure. We have one table which has 1, 2, 3, 4 fields. So write the following Python function to perform the specified operation, add and display. To input the details of an item is stored in the table. And next is the retrieve and display all the records from the stationery table where the price is greater than 120. तो हमें ऐड एंड डिस्प्ले फंक्शन लिखना है जिसके अंदर एक हम डिटेल इंसर्ट करेंगे एंड द सेकेंड थिंग वी विल शो द दोज रिकॉर्ड्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 120 और ये सब डिटेल दिया लोकल होस्ट रूट पासवर्ड and DB name is ItemDB, table is stationery. So to write to connect with the SQL, we have to import mysql.connector module. Then any function how we define def, that function name and colon. Then with this we create a connection string which contains MySQL connector.connect. It contains host, username, password and database. So these all values come from our questions. It is given there. So next here we are taking the cursor object and saving that in the variable mycur. And here we are taking to insert the record. We have to insert one record. So to insert the record, we are taking the value from user. We are taking item number, name, price, quantity, and the regular how we write a query, insert into stationery values, these four, and then query dot format those values. Then my cursor dot execute, and then you have to commit also to save to our table, otherwise it will not save. And the second thing, we have to display all the records whose price is greater than 120. So my cursor dot execute, select a star from stationery where price is greater than 120, and it will return all the result in this object itself. So with the help of for loop we can iterate and get those values. We have to call this function. This only will complete your questions answer, but to call the function we have to write like this. Suppose I'm giving the item number 6, item name eraser, price 5, quantity 65. So this got inserted, and already in my table one record was there whose value was greater than 120, price was greater than 120, so only that record saved displayed. So this completes your question number 35. So this completes your question number 35. So next is, so section D is complete.